Beta, we will start from question number 21 today. So in this question, they have asked us to calculate the value of inventory. So inventory the value calculate करनी है and question च सानू current liabilities given ने 6 लाख दियां and then current ratio and liquid ratio दो ratios given ने. सो किस तरीके नाल आपां सॉल्व कर सकते हैं. सब तो पहला करंट रेशो इज करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज. करंट रेशो ऑलरेडी थोनू गिवन है, दैट इज 3/1 एंड करंट लाइबिलिटीज गिवन ने 6 लाख दियां. सो करंट एसेट्स नू एज सच लिख लांगे एंड करंट लाइबिलिटीज 6 लाख दियां ने. सो इत्थों दी आपां करंट एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सो करंट एसेट्स विल बी 18 लाख, राइट. देन बेटा liquid ratio given a liquid ratio the formula ਹੁੰਦਾ liquid assets over current liabilities and liquid ratio is 1:1, right. So ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ liquid assets calculate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ because current liabilities ਦੀ value already given ਆ, right. So liquid assets ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 6 ਲੱਖ ਦੇ, right. So ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ current assets ਦੀ ਵੀ value ਆ, liquid assets ਦੀ ਵੀ value ਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ use ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ inventories ਦੀ value calculate ਕਰਾਂਗੇ. As you all know, liquid asset ਦਾ formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Current assets minus inventories minus prepaid expenses. Since prepaid expenses given नहीं है, so we will assume 0, right? So liquid assets ने 6 लाख दे, current assets ने 18 लाख दे minus inventories and prepaid expenses ਆਪਾਂ assume कर ले 0. सो ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ inventories ਦੀ value calculate ਕਰਨੀ ਆ, inventories ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਲੀਆਂ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ 18 ਲੱਖ ਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ inventories ਦੀ value ਆ ਜਾਊਗੀ. So that is 12 lakh, right. So inventories ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 lakh. So let us see question number 22 now. Moon Limited has a current ratio of 3.5:1 and quick ratio 2:1. So इस question च भी बेटे सानू current ratio and quick ratio given a and inventories the value भी पता, that is 24,000, and we are supposed to calculate total current assets and total current liabilities. So current assets और current liabilities ਅਸੀਂ calculate करनियां ने. सब तो पहला current ratio is current assets over current liabilities and ratio is 3.5:1. So इत्थों दी equation बन जूगी that current assets are 3.5 current liabilities, right. Then quick ratio given a quick ratio is quick assets over current liabilities and quick ratio is 2/1. ਹੁਣ quick assets ਤਾਂ given नहीं गे, right. But quick assets का formula सानू पता, that is current assets minus inventories minus prepaid expenses. मैं prepaid expenses नहीं लिख रही because question च given नहीं, so we are assuming prepaid expenses as 0 and then current liabilities 2/1. ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ अगर एक equation बनाइए that will be current assets minus inventories is equals to 2 current liabilities. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ करंट एसेट्स ਨੂੰ रिप्लेस करांगे 3.5 करंट लाइबिलिटीज ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है. वैल्यू सब्सटीट्यूट करती माइनस इन्वेंटरीज ਦੀ वैल्यू गिवन आ, that is 24,000 and this side 2 करंट लाइबिलिटीज. ਹੁਣ बेटे ਤੁਸੀਂ इक्वेशन सॉल्व करोगे and करंट लाइबिलिटीज ਦੀ वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे. So this will be 1.5 current liabilities 24,000. So current liabilities will be 24,000 over 1.5. So बेटे कितनी वैल्यू आ जाएगी 16,000. So current liabilities सानू मिल गया 16,000 दिया. Now we will put the value of current liabilities in equation 1 and we will get the value of current assets also, right. So current assets are equals to 3.5 current liabilities. Current liabilities are 16,000. So current assets की value कितनी आ जाएगी 56,000, right. So सानू current assets and current liabilities दोनों दी value मिल गई.
So this is question number 23. And again in question number 23, they have asked us to calculate the value of total current assets and total current liabilities. And bete previous question di tarah is question ch bhi current ratio and quick ratio the value given a and inventory the value given a. So this is exactly same as previous question. So सब तो पहला ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ करंट रेशो ਦਾ formula use करके एक equation बना लांगे. So that will be current assets equals to 4.5 current liabilities, right? Then quick ratio the formula ਹੁੰਦਾ ਵਾ quick assets over current liabilities and the ratio is 3/1 and quick assets ਨੂੰ replace ਕਰ ਦਾਂਗੇ quick assets ਦੇ formula ਨਾਲ that will be current assets minus inventories. ठीक है अगर बेटे प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਮਾਈਨਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ is equals to 3 ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 So bete ਹੁਣ ਆਪਾਂ current assets ਦੀ value substitute ਕਰਾਂਗੇ and we will take the value from equation 1 that is 4.5 current liabilities and inventories ਦੀ value question ਚ given ਆ that is 36,000 ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ current liabilities ਦੀ value determine ਕਰ ਲਾਂਗੇ 4.5 current liabilities minus 3 current liabilities is equals to 36,000 ठीक 1.5 current liabilities 36,000 and current liabilities the value कितनी आ जाएगी 36,000 divided by 1.5 and current liabilities will be 24,000. So ਸਾਨੂੰ current liabilities the value मिल गई. Now we will put this value in equation 1 and we will get the value of current assets also. So 4.5 into current liabilities that is 24,000. So current assets the value कितनी आ जाएगी 1,08,000 right. So वैसे तो क्वेश्चन सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज ही फाइंड ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਟ ਅਗਰ ਕੁਇਕ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਮਾਈਨਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਲਈ ਆ 1,08,000 ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਸੀ ਸੋ 1,08,000 minus 36,000 so you will get 72,000 as the value of quick assets. ठीक है so now let us see question number 24. question number 24 ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ ਪਿਛਲੇ question ਵਾਂਗ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ question ਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦੇ ਆ and we have current ratio and liquid ratio given in the question and inventory ਦੀ value ਵੀ ਆ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ current ratio is current assets over current liabilities and the ratio is 4 so we will write 4:1 and equation ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ that is current assets is equals to 4 current liabilities then liquid ratio is equals to liquid assets over current liabilities and the ratio is 2.5:1 and ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ equation ਬਣਾ ਲਓ liquid assets is equals to 2.5 current liabilities then liquid assets ਦਾ formula ਹੁੰਦਾ current assets minus inventories is equals to 2.5 current liabilities ਹੁਣ current assets ਦੀ value substitute ਕਰ ਦਿਓ inventories ਦੀ value given ਆ that is 6 lakh 2.5 current liabilities and ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ current liabilities ਦੀ value determine ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and you will get current liabilities is equals to 6 lakh ਨੂੰ 1.5 ਨਾਲ divide ਕਰ ਦੋਗੇ so current liabilities ਦੀ value ਆ ਜਾਊਗੀ 4 lakh. Now you will put the value of current liabilities in equation 1 and you will get the value of current assets also so that is 16 lakh.
एंड थोनों लिक्विड एसेट्स की भी वैल्यू चाहिए। सो करंट एसेट्स चो इन्वेंटरीज माइनस कर दोगे, लिक्विड एसेट्स की भी वैल्यू मिल जूगी। सो 16 लाख माइनस 6 लाख, सो लिक्विड एसेट्स कितने बन गए 10 लाख, राइट। सो करंट एसेट्स भी फाइंड कर ले, करंट लाइबिलिटीज भी एंड लिक्विड एसेट्स भी। So beta, let us see question number 25. This is also very much similar to the previous questions. So ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ questions ਤੋਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਇਸ question 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ, ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। then bete acid test ratio given a means liquid ratio given a 1:1 ਇਹਨੂੰ use ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ liquid assets calculate ਕਰ ਲਾਂਗੇ and ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ current assets and liquid assets ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ inventory calculate ਕਰਨੀ ਤਾਂ easy ਹੀ ਆ, right? So first of all we will write current ratio. Current ratio is current assets over current liabilities and ratio given a 3:1. current liabilities ने 1,50,000 दिया and we will get the value of current assets, that is 1,50,000 into 3. So we will get 4,50,000. Then liquid ratio is liquid assets over current liabilities, that is 1/1 and current liabilities given ne 1,50,000 diya. So we will get the value of liquid assets. So liquid assets कितने बन जाएंगे 1,50,000 दे. Now we will use the formula of liquid assets. So liquid assets are equals to current assets minus inventories. So liquid assets की value कितनी given है, मतलब ਅਸੀਂ calculate कर लिया 1,50,000, current assets 4,50,000 minus inventories and ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ inventories ਦੀ value calculate ਕਰ ਲਾਂਗੇ, right? So inventories ਦੀ value ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਸਾਨੂੰ 4,50,000 minus 1,50,000. So we will get 3 lakh as the value of inventories, right? Let us move to question number 26. In this question, we are supposed to find out the current liabilities. So, beta, this question to be sanu liquidity ratio given a, current ratio we already given a, and inventory the value given a. So, we are supposed to calculate the current liabilities. So, first of all, beta, appa liquidity ratio the formula use karange. That is liquid assets over current liabilities and ratio given a 2.5/1, right? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ that liquid assets are equals to 2.5 current liabilities and ਅਗਰ ਆਪਾਂ current ratio ਦਾ formula use ਕਰੀਏ that is current assets over current liabilities ratio given a 4/1 and ਇੱਥੋਂ ਦੀ equation ਬਣ ਜੂਗੀ current assets is equals to 4 current liabilities. ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ first equation ਨੂੰ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ and liquid assets ਦਾ formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ current assets minus inventories, right? And this is equals to 2.5 current liabilities and inventory the value already given 6 lakh, right? And जो current assets की value हुआ वो equation 2 तो substitute कर लांगे, that is 4 current liabilities, inventories are 6 lakh, this is 2.5 current liabilities. ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ current liabilities ਦੀ value ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, right? This is 6 lakh. So 4 minus 2.5 will be 1.5. So ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ current liabilities ਦੀ value ਆ ਜੂਗੀ. So current liabilities is equals to 6 lakh divided by 1.5 and we will get 4 lakh, right? So current liabilities calculate ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ and current liabilities ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ. Okay. This is question number 27. In this question, we are supposed to calculate the value of current liabilities, liquid assets and inventory and given information kiya current ratio and quick ratio are given, right? And current assets the value be given that is 5 lakh. So current ratio is current assets over current liabilities and ratio already given that is 2.5/1. Current assets the value pata wa 5 lakh over current liabilities is equals to 2.5/1.
ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that is 5 lakh 2.5 CL so current liabilities will be 5 lakh over 2.5 so current liabilities कितनी आ जाएंगियां 2 lakh right so current liabilities ਦੀ value ਮਿਲ ਗਈ next ਆਪਾਂ ਕੀ calculate ਕਰਨਾ liquid assets and inventory so ਹੁਣ ਆਪਾਂ quick ratio ਦਾ formula use ਕਰਾਂਗੇ quick ratio is quick assets over current liabilities and quick ratio is 1 over 1 quick assets means liquid assets so that will be equals to current liabilities and current liabilities ਦੀ value ਆਪਾਂ already calculate ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ तो साडे liquid assets भी उन्ने ही आ जाएंगे that is 2 lakh right ਹੁਣ ਅਸੀਂ inventory ਦੀ value calculate ਕਰਨੀ ਆ so we all know कि liquid assets ਦਾ formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ current assets minus inventories so liquid assets means quick assets जो कि ਆਪਾਂ calculate कर लिया 2 lakh and current assets question च given ने 5 lakh minus inventories so ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ inventories ਦੀ value determine ਕਰ ਲਾਂਗੇ so inventories will be 5 lakh minus 2 lakh so inventories ਦੀ value ਆ ਗਈ 3 lakh right so hence ਆਪਾਂ ਨੂੰ current liabilities भी मिल गईयां quick assets भी मिल गए and inventories ਦੀ value भी मिल गई let us move to question number 28 so in this question they have asked us to calculate liquid ratio so questions working capital given are 3,60,000 total debts given ne long term debts भी given ne and inventories given ne right so total debts and long term debts so we can calculate the value of current liabilities that will be total debts minus long term debt that is non current liability so total debt the value was 7,80,000 7,80,000 to long term debt ਆਪਾਂ minus कर देंगे that is 6 lakh and we will get the value of current liabilities that is 1,80,000 right then working capital given up working capital the formula ਹੁੰਦਾ current assets minus current liabilities and working capital the value ਆ 3,60,000 so ਇੱਥੋਂ ਦੀ current assets calculate ਕਰ ਲਾਂਗੇ because current liabilities ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ 1,80,000 we have already calculated so current assets किन्ने हो जाएंगे working capital plus current liabilities so current assets की value आ गई 5,40,000 देखो ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ current liabilities ਦੀ value ਵੀ ਆ and current assets ਦੀ value भी आ we can calculate the value of liquid assets क्योंकि question च inventory is given आ so liquid assets are current assets minus inventories prepaid expenses नहीं given तो ਆਪਾਂ नहीं consider कर रहे ठीक है current assets are 5,40,000 inventories given are 1,80,000 so liquid assets कितने आ गए 3,60,000 so calculate की करना liquid ratio is liquid assets over current liabilities liquid assets भी ਆਪਾਂ calculate कर ले and current liabilities भी calculate कर लिया and we will get the value of liquid ratio that is 2:1 so ये हो गया अपना final answer so in question number 29 we are again supposed to calculate the quick ratio so information की given a working capital given a total debts given ne non current liabilities given ne inventories given ne and this time prepaid expenses भी given ne so this is very much similar to the previous question so first of all we will calculate the value of current liabilities that is total debt minus non current liabilities so total debt the value are 18 lakh non-current liabilities are 16 lakh so current liabilities हो गया 2 lakh then working capital which is current assets minus current liabilities and working capital is 4 lakh so इत्थों दी current assets calculate कर लांगे current liabilities 2 lakh ने so current assets की value होगी 4 lakh plus 2 lakh that is 6 lakh
सो करंट एसेट्स भी मिल गए, करंट लाइबिलिटीज भी मिल गई. सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिक्विड एसेट्स ऑल्सो, और यू कैन से क्विक एसेट्स. ठीक है. सो क्विक एसेट्स विल बी करंट एसेट्स minus inventories minus prepaid expenses. Since questions prepaid expenses भी given आ, otherwise ਆਪਾਂ prepaid expenses ਨੂੰ zero assume कर लेने आ. So current assets are 6 lakh, inventories 1,90,000, prepaid expenses 10,000. So quick assets हो गए 4 lakh दे. So quick ratio is quick assets over current liabilities. Quick assets are 4 lakh, current liabilities 2 lakh. So ratio कितनी होगी? 2:1, right? So बेटा question number 30 च तुसी दसना whether the ratio will improve, reduce or not change. ठीक है. So quick ratio given a 2:1. So first of all what we will do is we will assume the values of quick assets and current liabilities, है ना. क्योंकि quick ratio ਦਾ formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Quick assets over current liabilities and ratio given a 2:1. So ਇਹਦੇ basis ਤੇ ਆਪਾਂ assume ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ quick assets to be 2 lakh and current liabilities to be 1 lakh. So ਆਪਾਂ assume ਕਰ ਲਈਆਂ values. Now we will see the transaction and check whether the ratio will increase, decrease or not change. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की आ परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. देखो ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਫॉर ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ. ਸੋ ਕੈਸ਼ ਅਗਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੁਇਕ ਐਸੈਟਸ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੁਇਕ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ. ਸਟਾਕ ਮੀਨਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਐਂਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤਾਂ ਕੁਇਕ ਐਸੈਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਇਕ ਐਸੈਟਸ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ. तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट की पै रहा कि साडे क्विक एसेट्स रिड्यूस होंगे. सो आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं. लेट अस सपोज आप 50,000 के गुड्स परचेज किए आ, ठीक है. तो कैश 50,000 का चला जाऊगा तो क्विक एसेट्स किन्ने दे रह जाएंगे 1,50,000 के. करंट लाइबिलिटीज से कोई इफेक्ट नहीं पै रहा. सो इत्थों की अगर आप देख रहे हैं तो रेशो साडी की हो रही है रिड्यूस हो रही है. सो इसका आंसर की हो गया दैट रेशो विल रिड्यूस. एंड बेटे तुसी रीजन की लिख के आओगे कि इस ट्रांजेक्शन की वजह ना क्योंकि क्विक एसेट्स डिक्रीज कर रहे हैं. ठीक है. सो बी पार्ट इज परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. सो दिस टाइम अगेन गुड्स परचेज किए गए बट ऑन क्रेडिट. हम ये तो पता चल ही गया कि गुड्स अगर परचेज कर रहे हैं तो क्विक एसेट से कोई इंपैक्ट नहीं पै रहा, करंट एसेट्स इनक्रीज करेंगे. एंड अगर क्रेडिट से परचेज किए तो क्रेडिटर्स इनक्रीज हो जाएंगे. क्रेडिटर्स इनक्रीज हो रहे हैं मीनस करंट लाइबिलिटी इनक्रीज हो रही है. सो अगेन सपोज कर लेने कि 50,000 के गुड्स परचेज किए आ, ठीक है. तो 50,000 क्रेडिटर्स अगर इनक्रीज हो रहे हैं तो डिनोमीनेटर इनक्रीज कर देने इस बारी. सो डिनोमीनेटर बन गया 1,50,000. और इन्हें तुसी कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 1.33 समथिंग, ठीक है. तो अगेन रेशो की आ रिड्यूस कर रही है, ठीक. So now let us move to third part. Third part's given a sale of goods costing 20,000 for 20,000. So goods sale कितने आ 20,000 दे goods 20,000 ची sale कितने आ, ठीक है. So अगर goods sale कितने आ stock decrease हो रहा but quick asset से कोई impact नहीं पड़ेगा. But 20,000 sale कितने आ तो cash भी तो receive कर रहे हैं 20,000 दा, तो quick assets increase कर रहे हैं इस case, right? सो मतलब न्यूमिरेटर इंक्रीज कर रहा है 20,000 नाल. सो हियर वी विल टेक 2,20,000 बट करंट लाइबिलिटीज से कोई इंपैक्ट नहीं पै रहा. रेशो की हो रही है साडी इस केस च इंप्रूव कर रही है, दैट इज 2.2:1, राइट. सो आंसर की हो चुका दैट रेशो विल इंप्रूव, ठीक. सो लेट अस सी पार्ट डी. सो डी पार्ट अगेन गुड सेल हो रहा, गुड सेल हो रहा, स्टॉक डिक्रीज हो रहा बट क्विक एसेट से कोई इंपैक्ट नहीं पै रहा. 22,000 गुड्स अपा सेल किते आ तो अगेन वी विल रिसीव कैश 22,000. देखो बेटे इस रेशो च तुसी प्रॉफिट और लॉस नहीं कंसिडर करना हुंदा, ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, ठीक. तो तुसी सिंपली देखना कितना कैश रिसीव कर रहे हो. सो कैश जिन्ना भी रिसीव कर रहे हैं उन्नी वैल्यू नाल साडे क्विक एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे,
ठीक है, तो ਆਪਾਂ 22,000 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ 2,22,000, ਬਟ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 2.22:1। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਪਰੂਵ। ਠੀਕ, ਨਾਓ ਦ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ, that is cash received from trade receivables। so trade receivables ਤੋਂ cash receive ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, so trade receivables are part of quick assets, so quick assets decrease ਹੋ ਜਾਣਗੇ because cash receive ਕਰ ਲਿਆ and cash increase ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ same value ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ quick assets decrease ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, increase ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ impact ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ratio ਤੇ, because numerator 'ਚ ਤੁਸੀਂ same amount 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ plus ਕੀਤੀ, ਫਿਰ same amount minus ਕਰਤੀ, ਤਾਂ numerator ਤਾਂ same ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, right? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ratio ਜੋ ਆ ਉਹ change ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, okay?